doing a live stream. So I hope all of you guys can hear me, and thank you for joining. First of all, I wanted to say that this is something that I was looking forward to, and something that I thought that while I can do my small bit individually, I think the community that we've built over here, we can also help in a small way. It isn't, of course, a necessity for you to contribute, but if you can, there is a super chat with which you can donate. I have also in the community post presented, things that the organizations to whom I am contributing, and I hear your concerns. But I will do my due diligence and do my research to make sure that it goes in safe hands. So if you want to help in any way, the super chats are available. So please do so, help in any way you can. If you can't, that is fine as well. So I thought I'll start this with two creators that I find absolutely hilarious. Movie reviews and everything about it on the platform is something that gets a toxic reputation as well. But these are guys who sort of like make it their own, and people who I find extremely funny. So Zain and Shubham, please do join. And whoa, drum rolls. Everyone was like, "ये collaboration कहाँ से आ रहा है? अच्छा है कि ना? क्या intention है इनका?" And I was like, "Dude." I just started speaking to both of them, and I've had a really cordial back and forth with both of you. So I thought it was best to start the conversation like this. Yes. कैसे हो? Zain, आप ही करो चालू. English है यहाँ तो full. The funniest was that before the live stream even started, people were like, ये शुभम ये जैमी की तो ले लेंगे, शुभम इससे बोलने नहीं देगा, अरे हिंदी में सोच लियो तू. Anyway, that was all banter. But I wanted to ask you, both of you guys have got your vaccinations. So Zain, if you can start first of the process itself, and why you would also want everyone to do so. So for me, it was not that difficult because I had already got one dose for my father. So वहाँ से मुझे more or less अंदाजा था how COVID works, etc., etc. But my wife had registered us already, and we were looking for slots. And then this one day randomly, Shubham texts us on a group saying that East Delhi में slots खुल गए, book कर लो. And that was the moment like I went on to COVID, and I just put the pin code. I think 92 था Delhi का, and I got a slot in Shahadra, which is about 30 to 40 kilometers away from my house. But I was like, let me book it. Let me just get it wherever I'm getting. So वो था मेरा, and then from there on it was quite chill, quite smooth. But now that of course more people are logging on, and of course जो vaccine का shortage है, etc., I know कि वो पहला dose इतनी easily नहीं लग रहा है. So, but yeah, for us it was quite. I mean, thankfully it was quite smooth. I didn't have to put any plug in or go through anybody. It was just quite smooth for me. I saw you reposted your wife's story where people will have different symptoms where you were better off, but she had to go through fever or 1 or 2 days of things. So it oscillates depending on individual, right? Correct, absolutely. And good part is that they tell you these things abundantly. कि ऐसा ऐसा होगा, so nothing to worry. So she had a lot of fever. I know some of my friends in the building that I live in have had almost flu-like symptoms. Again, not claiming it because it would need some medical correlations to understand. But I was absolutely fine. I turned up. I was fasting from the next day, and I was absolutely fine. No fever, no weakness, nothing. Shubham? मुझे भी कुछ फील नहीं हुआ ऐसा. मेरा एकदम ठीक था. मेरे को तो इनफैक्ट डाउट हो रहा था कि लगी भी है कि नहीं लगी है, क्या बाहर ही तो नहीं निकल के ऐसा था. वो ऐसे ऊपर से ही तो नहीं लगा दी उसने. बट ठीक है, मेरी सिस्टर ने भी सेम ली थी, सेम डे ली थी, तो उसको फीवर आया. 5-6 घंटे रहा और फिर एक पैरासीटामोल खा ली तो चला गया. तो बस उतना ही था, और तो कुछ नहीं था इससे ज्यादा. प्रोसेस लोग कह रहे हैं कि दैट वे बहुत ही स्मूथ है. हाँ, मतलब दिल्ली का तो बहुत स्मूथ है. पर जो ऑन लोकेशन हो रहा है वो बहुत स्मूथ है. हाँ, मतलब दिल्ली में तो स्मूथ है.
जब जिस दिन मुझे स्लॉट मिला था वो डे 1 था, तो उस दिन थोड़ी वो थी कि जब हम सुबह सुबह गए थे, मतलब दोपहर में गए थे 1 बजे, तो तब तक तो कुछ आया ही नहीं था। बट फिर 1-1.5 घंटे बाद से शुरू हो गया था, फिर स्मूथली चला और फिर थोड़ा लेट तक भी चला, क्योंकि उन्होंने लेट शुरू किया था तो उन्होंने लेट तक उसको चलाया। अदर देन दैट उसके बाद से तो मैंने नहीं ऐसा कुछ सुना है कि कुछ है। एक और हुआ था हाँ इंसिडेंट, मैं जब अपनी मम्मी की सेकंड डोज के लिए गया था तो बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था और फिर वहाँ पे एक मिनिस्टर आते हैं और सारे डॉक्टर सब उन्हीं की उसमें लग जाते हैं कि अरे ये आए हैं तो जरा इनको थोड़ा टाइम दे, और आधे घंटे वहाँ कुछ नहीं होता है, सब लोग अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, उन्हीं की वो चल रही है। वो अच्छे स्मूथ चलते हुए सिस्टम को आके उन्होंने देखा कि हाँ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर उन्हें श्योरिटी आई कि नहीं नहीं सही चल रहा है, तो फिर वो चले गए वहां से। मतलब आधा घंटा खराब करके गए वो लोग। Bureaucracy has to kick in somewhere, where the VIP हाँ, कहीं से तो आएगा. हाँ. यस यस यस। Also, I wanted to just say thank you, Nona Prince, for your super chat. Jeet Gator, Garima Ranjan, Latangi Krishnan, Pulkit Malhotra. Thank you, all of you, for your contribution. Whatever it is, just helping in any way, it does mean a lot to me. And, all these big amounts keep on flashing all over social media. So I didn't want to discourage myself by saying, "Arey yaar, कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा ही कर पाएंगे, थोड़ा सा भी कर पा रहे हैं." So I think it just makes a difference. Also, so Zain Shubham, I just wanted to say कि I really wanted to talk to you about a lot of gossip. अरे शुभम ये शुभम का डिपार्टमेंट है. ये शुभम is the freshest gossip monger I have seen. इतनी बढ़िया बढ़िया gossip लाके देता है ना कि मैं आक्का बक्का हो जाता हूँ. In fact, my wife asks me after every shoot, आज शुभम ने क्या बताया? नहीं, because the hot topic when I posted the community on the community page was, अरे भाई ये बात कर लेना, ये बात कर लेना, इस movie उस actor. I was like, wow, there are already requests happening because पता नहीं क्या anticipation है कुछ. तो मुझे पहले शुरू करना था कि like you put into perspective, I don't know how you guys do it, but pandemic hai, and we're creators, entertainers, जो भी है. So and more or less आपका जो show है वो एक comedic show hai. It is a comedy show. I mean, you try to do a review, but at the same time you're doing gags in the middle and everything else. So I wanted to ask you, मैं ऐसे sort of existential crisis में जा रहा था कि what is the point of me uploading a review of this movie while all of this is happening? The sense of insignificance I felt, who cares, क्यों करना है, और मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बना के पैसे कमा के बस बैठे रहूं. So that is what my internal process was. How did you get through that hump and still produce content? I wanted to know. Shubham, you would like to take that? मैं तो कर रहा हूँ कॉमेडी पूरी, मतलब अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ. मतलब अब इतना दुख तो है ही चारों तरफ, उसमें मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट ना करूँ कॉमेडी के लिए, तो मेरे से तो नहीं होगा. मैं तो प्रो आईपीएल भी था कि आईपीएल भी चलता रहे, आईपीएल भी होता रहे, जितनी चीजें हो सकती हैं. मतलब अब ऑफ कोर्स लोगों की जाने जा रही हैं, हमारी फैमिली में भी कुछ रिलेटिव्स के साथ हुआ है ये सब, बट फिर वही समझ में आता है ना कि उसको तो हम घर पे बैठ के ही रोक सकते हैं. मतलब कि हम बीमारी ना फैले, इसमें तो हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही है कि हम चैन से घर पे बैठे, बाहर ना जाएं, वैक्सीन के लिए लोगों को अवेयर करें, वो सब करें. बट उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो फिर यही कर सकते हैं कि हम कॉमेडी कर सकते हैं, वो हमें करना आता है. तो एटलीस्ट जिसको ऐसा कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है, जिसके मतलब कि खुद ही बीमार नहीं है या तो बहुत ऐसा क्रिटिकल उसके साथ नहीं हो रहा है, उनको तो हम थोड़ा सेन रखने की कोशिश कर ही सकते हैं. ऑफ कोर्स लोग आते हैं, गिल्ट दे जाते हैं कि कैसे तुम ये कर रहे हो और ये हो रहा है, तो मैं तो पर्सनली उस सब पे ध्यान नहीं देता. और ठीक है, मतलब जो लोग नहीं हंसना अफोर्ड कर सकते इन टाइम्स में, उनको सॉरी कि हम वो कर रहे हैं, बट हम उनके लिए कर रहे हैं कि जिनको थोड़ी सैनिटी चाहिए इन टाइम्स में, उनके लिए हम कर रहे हैं अपना I बेट. think I was also discussing with some other creators. People crave for that escape sometimes also. So if you are providing that, it is still a need for them during this tough time. Correct. Yes, I think वही है ना कि what Shubham said, that of course, I mean, there is no comparison to the tragedy that is going on in the country right now. There's absolutely no denying that, and we as creators or as independent citizens are doing whatever we can to support our fight in that, whether it is amplifying. I mean, बहुत ही छोटा
बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन है वो भी कि चाहे एम्पलीफायर रिक्वेस्ट करें, चाहे हम जो आज जिस तरह का लाइव सेटअप कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू रेज व्हाटएवर लिटिल अमाउंट ऑफ फंड, हम उसके अलावा भी वी आर आल्सो इन अ वे ट्राइंग टू कीप द नेशन सेन, बिकॉज व्हाइल वी मे eventually come out of this pandemic physically, I don't know how mentally fine we would be. And I mean, there are people in my family who are currently fighting it out on ventilators, etc., who I do not know will even be able to make out. And honestly, like दिन के 20 घंटे मेरा दिमाग वहां रहता है, even while I'm sleeping, subconsciously I'm occupied. And मेरे लिए भी वही था कि मेरे लिए वो 2 घंटे का escape होता था कि मैं IPL देखता था 2-3 घंटे. So yeah, I think that's the point, Anmol, ki matlab eventually it's just, I won't call it escape, I would just call it some bit of logging off, so that you just take care of, just for a moment, take care of yourself mentally. Somebody was saying that पहले होता था that real life के problem से हटने के लिए हम internet use करते थे, but internet consume कर करके, जो news consume कर करके, now we want some form of normalcy by going away from it. It's a weird transition that's happened. No, you can be on the internet, log on to Kangna's Instagram, that's good enough. भाई उसने आज बोल दिया वो छोड़ दिया है. That was going to be my topic later. Your relationship with Kangna. We'll come back to that. उसने आज बोल दिया वो छोड़ दिया Instagram भी. वो कह रही है वहाँ से ब्लॉग होगा मेरा ऑनर होगा. Every time somehow I tune into the Mensxp podcast, somehow whenever I do, Shubham talking about Kangna on Instagram. लोग लिख रहे होते हैं. अभी किसी ने 500 रुपए देके पूछा है कि या हम क्वेश्चन बाद में लेंगे. अब इसने पैसे देके पूछा है तो बोलो. हाँ, इसे लंबा सा लिखा है. इन्होंने पूछा है, do you think South movies are doing good than Bollywood movies? That was also going to be one of my questions for both of you, because I keep on doing sort of Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada cinema videos, and despite the pandemic, first wave and second wave, both all 4 industries have done over 70 CR movies. It is also because there's a huge culture of single screen theaters down south. Also, but what they've done is, I saw both of you did a master review also. There is a faith that these leading stars have with the content and their commercial value over there, where they're taking the risk of releasing their movies. I mean, at the time when theaters were open. But sadly, the situation with the Hindi film industry is that no one's willing to take that risk. Salman's doing that, which we'll come to later, but he's also in a predicament where he's like, Eid release karni hai to kar dete hain. So it is definitely an example that I think these guys should take, because I'm telling you, there are some average movies also that just because these guys wanted some kind of entertainment, it was doing like over 70-80 CR. लव स्टोरीज, एक तेलुगु फिल्म है उपेन्ना, हाँ, मतलब कि ट्रैजिक सी लव स्टोरी है, बट इट डज ओवर 90 CR. So, and I think the Hindi film industry's biggest success was Ruhi. No, I think a lot of it has also, I think what the other question was also the difference in content. मतलब eventually हमारा, I think Hindi, if you look at the mindset that we go ahead with movies is that we now calculate whether that movie is worth a cinematic experience or that amount of money or not. Whereas, which is what you were saying, that the single screens come in very handy. Yeah. They don't sell an experience. They don't sell an experience at a premium. And it's very accessible. कि मतलब मैं घर पे देख रहा हूँ, उससे अच्छा मैं 150 रुपए का टिकट लेके देख गया. यहाँ दिल्ली में मतलब 300-350 रुपए का हम टिकट लेते हैं, उसके बाद 500 रुपए का हम पॉपकॉर्न लेते हैं. No, it is definitely. And then you watch shit stuff. Yeah, but Zain Shubham, मैं सच बता रहा हूँ, the priority of their filmmaking is not catered towards marketing. It is the story. So correct. When you have Ruhi and Janvi's 3 remix songs, which is packaged as you feeling influenced, this will lead to a ticket purchase. Their idea itself is a bit, I don't know. No, absolutely. Okay, so a few super chats. Ankur Sharma, thanks. I have faith in you guys, so that reason I'm donating. I just hope it's helps someone in need. We will definitely do our due diligence. Don't worry.
I think this is a Mensxp special. Ajinomoto contribution, and Jamie, absolutely love your presentation. Ashutosh, thank you. Sarthak said, you guys are awesome and great initiative. Vamsi Krishna has said, stay safe and wear masks. Why Bollywood review guys are seriously obsessed with South movies? Because all the worst films like Saho and few other movies are huge hits in Bollywood. Do you think South movies are doing? Okay, I think we've covered most of that. Everyone's going to have bad apples. I don't think that any industry can have like a great track record anyway. Wasim Bits, hi Jamie, Zain and Shubham, Dr. Wasim Ansari here. Even in my hectic duties since a year, I never missed the review from my 3 favorite reviewers. Happy to see you all in one frame. Arey, so sweet. बस इन्हीं के लिए कर रहे हैं हम review. नहीं इन्हीं के लिए कर रहे हैं. Also, I want अभी भाई देख लेते हैं बीच में शिफ्ट के बीच में. वो काफी है. बस डॉक्टर साहब देख के ऐसा ना बीच में कहीं कुछ अंदर रह जाए. नहीं पिलाई विलाई बंद करने के बाद ही आप रिव्यू देखें. One of the main reasons why I connected with both of you also is because you guys have spent your time in Bombay, right? So there is this connection that I feel because of the transplant feeling that you feel. जब दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं जो मतलब कि I genuinely I have a love-hate relationship with Bombay, where मुझे लोग बहुत पसंद हैं, मुझे जगह पसंद नहीं है, और मुझे रहने की जगह पसंद नहीं है. मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार गया था, दोस्त के घर रह रहा था, एंड यू नो ही इज लाइक हाँ फ्रेशन अप कर ले और ये वो, और मैं शावर के लिए गया और मैं बाहर आया, मैंने कहा हाँ टॉवल मैं बालकनी में टांग देता हूँ. कहते यहाँ बालकनी नहीं होती, वहां पर वो कोने में ड्राइंग रूम में जो बाथरूम स्टैंड है ना उसके ऊपर. सो दैट इटसेल्फ was like, okay, this is one part of Bombay that you get used to, the confined space with the huge amounts of rent that you're paying. Second was when I started interacting with the Bollywood bubble, and that Bollywood bubble is scary. I don't know what you guys have experienced, but their echo chamber feels like that's what there was this producer that I was talking to, indie producer, and he was like, ये सब एक साथ ही घूमते हैं और ये सबको लगता है कि यही इनकी जिंदगी है, तो ये पिक्चर भी इसी जिंदगी की बनाते रहते हैं. So I don't know what was your experience in Bombay and interacting with a few people. So I never lived in Bombay. Like I never had a house in Bombay or anything. मतलब मैं गया हूँ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए 20 दिन 25 दिन 1 महीना रहा हूँ at max. So I'll come back to the bubble वाला thing बाद में. शुभम एक्चुअली बॉम्बे में रहता है. So okay. Shubham will be able to say that better. मैं वही बोलूंगा जो जैमी ने बोला, मैं भी एग्री करता हूँ कि काम करने के लिए अच्छा है वो शहर, लोग अच्छे हैं वहाँ के, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपने, कोई आपको जज नहीं करेगा, सब अपने काम में लगे रहते हैं, बहुत बिजी लोग हैं. लेकिन रहने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है वो शहर, वहाँ रहने जैसा कुछ नहीं है. मैं अब तो चलो फिर भी पार्शियल लॉकडाउन में रहा हूँ 6 महीने, अगस्त से लेके मार्च तक 6-7 महीने. उससे पहले भी जब मैं 1-2 महीने के लिए गया हूँ वहाँ, तो बिना लॉकडाउन के भी कुछ ऐसा है नहीं वो शहर. वहाँ खेलने की जगह तुम्हें पैसे दे के बुक करनी पड़ती है, और यहाँ अपने नॉर्थ में तुम देखो यार जगह की कोई कमी नहीं है. तुम कहीं भी 10 ईंट लगा लो, एक उधर 10 ईंट लगा लो, पिच तैयार, ग्राउंड तैयार, दोनों साइड तुम लंबे शॉट. Difficult thing for Delhiites to adjust to, at least. For anyone who's had a drawing room, be like, अबे भाई यार ड्राइंग रूम किचन और वो सब एक ही कैसा है. तो हाँ मतलब वही तो, वहाँ रहने लायक वो बिल्कुल नहीं है. बाहर का बहुत सही, मतलब लोग अच्छे हैं, काम वाइज प्रोफेशनल बहुत है. जैसे दिल्ली में तो क्या है कि सब ऐसे गोली देते रहते हैं कि हाँ हो जाएगा कर देंगे. वहाँ वैसा नहीं है. वहाँ अगर स्ट्रिक्ट शूट शेड्यूल है कि 8 से 8 की शिफ्ट है तो 7:30 बजे लोग पहुंचेंगे. और ट्रैफिक को तो मैं बोल भी नहीं रहा कि ट्रैफिक ज्यादा है वो. But I'll tell you what it's good for, Shubham. What it's good for it, if you want to make a lot of money, that environment itself compels you to keep on working. हाँ वहाँ पैसे कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. मतलब नॉर्थ से 5x 10x भी है अगर तुम्हें काम करने जाना है. बट वो जो कमाओगे उसे खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है. खाना अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है वहाँ पे. मतलब एटलीस्ट नॉर्थ में इतने साल रहने के बाद तो नहीं अच्छा लगता. तो वो सब बहुत प्रॉब्लम है. और जो दूसरा क्वेश्चन था कि वो लोग अपने बबल में घूमते हैं, हाँ तो वैसे वाले लोग हैं वहाँ पे काफी हैं. अब तो आई थिंक वो थोड़ा टूटता जा रहा है उनका वो, जैसे OTT आ गया है. हर जगह है. मतलब अगर तुम ये इंस्टाग्राम के जो कम्युनिटी है उनको भी देखो, ये भी आपस में तो एक दूसरे को घूमते रहते हैं, एक दूसरे की डेड स्क्रीमिंग करते रहते हैं. तो ये सब जगह ये
ये तो आई थिंक इंडियन क्रिकेट This, टीम में with भी all होगा due ही. respect, like when first wave happened, the viral thing was that Katrina is doing jhadu. So that was like the level of like bubble, which is in every city. You're right about that. Every city, every profession. I mean, Yeah. like again, like Instagram, but that's a running joke that we also have. Ki they just keep, how do I say? They just keep trying to one up each other, and then trying to just, how do I say? वो उसी बबल में एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं. That's what happens. No, I agree. But I don't even know how to process it. I just sort of like, I guess you do your due diligence. I think you're a good example of that because, like, I was seeing your Instagram. You were constantly working towards whatever the issue was, right? But I see a lot of influencers. So I'll tell you this, double standard बहुत जो मुझे एक बार ना मैंने ज़ैन को मैसेज किया था. Okay, this was when the pandemic had become a little small. ज्यादा cases आ नहीं रहे थे apparently. हाँ, वही तब की बात कर रहे हैं जैन, जब आपने मास्क पहनना छोड़ दिया था. नहीं. Okay, और मैंने ज़ैन को मैसेज किया, आप इस जगह पे हो दिल्ली में, because I thought I saw him. And he was like, नहीं मैं घर पे ही हूँ. मैंने कहा अच्छा. So I'm the irresponsible one जो बाहर आया है और दोस्तों के साथ घूम रहा है. और फिर वो दोस्त मुझे बोल रहे हैं यार कितने केसेस हो रहे हैं ना, शिट यार लोग क्या कर रहे हैं, लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे, while sitting in that restaurant or bar talking about everyone's so irresponsible. So I felt like that was also a very interesting thing that I found with our population was that me being a culprit of it also, if we're stepping out, taking sort of precautions, but still complaining about what situation we are in. वो तो है ना यार, वो तो हमेशा यही है कि गलती दूसरों की है, तुम क्यों नहीं मास्क पहन रहे वाली बात है. Anyway, चार लोग अभी राजेश की गली के बाहर भी 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे थे कि भाई लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. गली में खड़े होके. No, I was in Kanpur when the first lockdown happened. तो वहाँ ये था कि लोग, मतलब छोटे शहरों में होता है कि लोग बहुत सोशलाइज करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वहां ये हो गया था लॉकडाउन के समय पे कि कोई कहीं जाता नहीं था, बस सब अपने अपने बैल्कनी में इकट्ठा अपने अपने आंगन में एक साथ चाय पीते थे. मैंने कहा तुम लोगों ने क्या मावहन करी लॉकडाउन की यार, एक दूसरे घर नहीं जाएंगे, आंगन में आके एक टेबल से चाय पीते थे. No, the double standards. It's hilarious to watch it from bird's eye view. It's the lack of self-awareness is hilarious. Acha guys, Noble Gill says $50. Thank you for it. Stay safe, everyone. And I cannot say in words how long I've been waiting for this collab. Thank you, Vishnu. मुझे उसने एक आइडिया दिया है मुझे बात करने की. Thank you, Archit. Akash, thank you. Anjali, thank you, all of you guys. Yeah, this is way more than I had imagined. So thank you for all your contributions. देख रहे हैं इसके चैनल में $50 लोग चैरिटी में दे रहे हैं, हमारा रिव्यू देखने के लिए नहीं दे रहे थे. For introducing me to movie-related content, lots of love. Nepali living in Australia. Okay, so guys, I really wanted to ask you: did both of you watch Aspirants? हाँ, we did. वो मैं तेरे से पूछने वाला था कि फिनाले कैसा लगा, देखा क्या तुझे? मुझे ना किसी एक बड़े बंदे ने बोला. मैंने नहीं देखा है अभी. अच्छा, अभी नहीं देखा तो फाइनल एपिसोड का स्पॉइलर मत देना, डिस्कस कर रहा हूँ, स्पॉइलर मत. स्पॉइलर अरे स्पॉइलर क्या है उसमें, तो पता ही है कि वो अभिलाष नहीं है. स्पॉइलर शुभम क्या कर रहा है? मत देना भाई, मैं अगर है तो मत दो, मतलब मुझे देखना है. ऐसा कोई स्पॉइलर नहीं है. बताओ, 2 कैटेगरी है. एक कैटेगरी बड़े बंदे ने क्या बोला वो बता. नहीं शुभम तू ये मुझे बता, एक कैटेगरी है जिसे बिल्कुल प्यार है इतना कि मतलब रीपोस्ट पे रीपोस्ट हो रहे हैं, और एक है जिस लाइक ठीक था. सो आप कौन से उस कैटेगरी में हो? मैं कैटेगरी तो नहीं चूज करना चाहूंगा, मुझे काम करना है उनके साथ. मेरा अभी सीजन 3 सीजन 4 आएगा हॉस्टल डेज का, मैं वो तो कमेंट नहीं करूंगा. मैं इन जनरल डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू फेल्ट. फिनाले मैंने देखा, मेरे को कुछ चीजें लगी. फिनाले मैं सच कह रहा हूँ 5 एपिसोड में खत्म करना मुझे तुक नहीं समझ आया. मतलब कि और बहुत कन्वीनियंट लगा मुझे जो एंडिंग थी. पर यार मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों पर टीवीएफ कंटेंट से प्यारी है. सेम यार कोटा फैक्ट्री में ही मैंने ये नोटिस कर लिया था, पर इस बार अनअकैडमी के वो जो एड्स थे वो बहुत ही जारिंग थे. मतलब कि
वो मतलब डायलॉग बीच पे चल रहे हैं और वो अनअकैडमी का एड बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस वाला वो मोबाइल एड की तरह ऐसे आ रहा था। बट चलो उसके लिए तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अगर फ्री में आपको इतना बढ़िया वेल शॉट वेल प्रोड्यूस्ड कंटेंट दिखा रहे हैं जिसको बनाने में अच्छे खासे पैसे लगे होंगे, तो वो कहीं से तो आनी है। अब अगर हाँ वो मतलब वो ऑडियंस को अपनी even I अपनी think पॉकेट अनमोल, से, हाँ हाँ sorry go हाँ, ahead. अगर वो ऑडियंस को अपनी पॉकेट से नहीं देने हैं तो फिर कहीं से तो लेगा ना टीवीएफ, और फिर टीवीएफ वो ले रहा है ब्रांड से, तो आपके पास हमेशा चॉइस ही है ना कि अच्छा चलो अब आपको पता है यहाँ अनअकैडमी की बातें होने वाली है, यूट्यूब पे तो 20 सेकंड 30 सेकंड स्किप कर दो, जितने 45 सेकंड एट मैक्स उन्होंने बोला होगा, तो वो जारिंग था। बट शायद आई थिंक ब्रांड की रिक्वायरमेंट वैसी रही होगी, क्योंकि मैं खुद इंस्टाग्राम पे और बहुत सारा ब्रांडेड कंटेंट करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो मुझे तो कंपैरेटिवली बहुत कम पैसे देते हैं, तो कितनी उनकी डिमांड रहती है, तो टीवीएफ को तो उन्होंने इसके लिए कितना सारा पैसा दिया होगा, तो बदले में ऑफ कोर्स उन्होंने मांगी होंगी ये चीजें, और फिर वहां पे आपको कि हम यार स्टोरी पे ध्यान दें कि हम इस पे दें, तो फिर आप वही सोच लेते हो कि चलो ठीक है, मैं बाकी के 40 मिनट तो अच्छी चीज बना ही रहा हूँ, अगर 1 मिनट कुछ दे भी रहा हूँ ब्रांड को तो ठीक है, तो उसकी कंप्लेन तो मुझे नहीं लगता लोगों को करनी चाहिए। और बट आई हाँ थिंक फिलहाल वो पैराडाइम शिफ्ट भी है. बट अब वो देयर इज अ अब वो मोर it will become normal in the coming few months or years, because see YouTube is also essentially an OTT platform. या आप अगेन लाइक मैं कहता हूँ सब्सक्रिप्शंस भी पेड होने लगेंगे मोस्ट लाइकली, प्रीमियम कंटेंट आना लगेगा, और इस तरह का जो जिस तरह से टीवीएफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आ रहा है. इनफैक्ट तमाम चैनल्स तो ऐसे हैं जहां पर फुल फ्लेजेड एड आता है, एंड इट्स नॉट दैट यूट्यूब एड, इट्स एन एड that is uploaded as the video. या So नहीं it's this paradigm change. वो that's it's hard to resist. I just feel I don't have any issue with the plugins. I just feel like there can be a more natural way of integrating that into the script. मुझे बस इस बार लगा ज्यादा ही वो इसके सारे फीचर्स बता रहा था ऐसे जैसे मतलब कि फुल ऑन हो. बट एनीवे द पॉइंट बीइंग, बट उन्होंने वो अच्छा किया कि 4th एपिसोड जो था, जो मुझे लगता है कि पूरी सीरीज का जो बेस्ट एपिसोड था, बिल्कुल यार, हाँ, उसमें कहीं अनअकैडमी नहीं था, तो आई थिंक वहां उन्होंने भी कन्विंस कर लिया कि शायद मे बी डील यही रही होगी, ठीक है हम हर एपिसोड में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट, जो हमारा मेन एपिसोड है उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि 4th आई थिंक मेजर था, 4th के एंड तक ठीक है, एक वो बड़ा सवाल था कि क्या संदीप भैया बनेंगे नहीं बनेंगे, बट वो उसमें दो ही चीजें थी ना, क्या तो बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, और वो फिर नहीं बट a lot of people felt something else also. बट जैन को देखा तो 5th एपिसोड देखने तो भाई एक तो जैन देख के नहीं आया, हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हो रहा इसके चक्कर में, मुझे पता नहीं था ना, वरना मैं ऊपर से देख कर आ जाता. भाई अभी तो क्या इसमें आप सोच रहे हो कि 3 रिव्यूअर्स बैठ के बातें कर रहे हो, तो जो सबसे ज्यादा शो चल रहा है उसकी बात तो आएगी. नहीं बट I have to bring up something. First of all मुझे थोड़ा 1 मिनट कॉम्प्लीमेंट करने दो आप दोनों को कि कुछ चीजों से मैं ना एनवियस होता हूँ जब मैं क्रिएटर्स को देखता हूँ, तो या तो उनकी कॉमिक टाइमिंग हो या कुछ भी हो, बट I struggle with a sense of lack of self-confidence and this sense of self-hate or whatever. And when I see both of you in front of camera being the what the show and the format demands, I feel envious because you have no inhibitions. So have you guys all your life been like the guy cracking the jokes in the class and the guy is always sort of doing banter? I have been, yes. Then पहले आप बताओ. मेरा तो यार मिक्स बैग रहा है, मतलब मैं आई एम प्रीटी मच ऑफ एन एम्बीवर्ट. अगर आई एम इन अ ग्रुप वेयर आई एम कंफर्टेबल विद, आई कैन, मतलब तब मैं हंस बोल लेता हूँ, हंसी मजाक कर लेता हूँ, बट अगेन आई एम आल्सो ऑन द अदर साइड, आई एम आल्सो एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड, अगेन वेरी अंडर कॉन्फिडेंट टू स्पीक टू न्यू पीपल, टू टॉक टू न्यू पीपल. तो मतलब हाँ मेरा वो है, आई एम अ बिट ऑफ बोथ. बट शुभम तो आउटराइटली मतलब हाँ, Shubham comes across that way also, like very unapologetically. अरे भूलिए क्या होता है मेरा जब साथ में कोई सेलिब्रिटी बैठता है. हाँ वो एक अलग चीज है. नहीं बट कोई मसला नहीं है उसमें. मैं ये भी कह रहा था, what I am dicey about and you guys do unabashedly is the lack of filter you guys have. Huh? So in the review, whatever the review is, you will crack the jokes on the actors' personalities. Okay, like what they did, if they did something dumb or whatever, and somehow that's a gag in the middle of the review. Okay, I find myself in the review being, with all due respect, with context, with so there's always like a buffer
that I do, and then I get into why I hate whatever they did. Okay. So this concept of the art versus the artist is the biggest debate right now because we live in such a polarizing world. So what do you think about that? Can you watch Thalaivi and then separate Kangana, the personality, and be like, oh, this was a great movie, but I don't agree with whatever she stands for? Or it is something that you have to put into context when you do like reviews or analysis? See, when we are doing reviews, we don't carry baggage, honestly, as to what the film will be, what the film is trying to say, what the film is trying to talk about. I mean, as recently as, I mean, you will come out of a film where you will see that they've tried to play a lot of nationalist themes just to emote a certain sense of emotion, etc., etc. So, but when we're reviewing, of course, we try to make sure कि अच्छा हम film की बात करें. But of course, there is a lot of context involved. But which is where we do all of that in the first half of the review, where we are talking about all sort of shit that is going on in the country, and I think the both of us as creators, and we are doing a lot of live streams these days. Where we do Shubham, Rajesh, they do a lot of night lives these days, where they talk about everything political, social, cultural. So हम अपने reviews में भी we do a bit of that, but once you're talking about the film, then it's largely about the art and not about the artist. You know, Zain, but I find myself always struggling because, you know, Shubham especially puts himself out there with the content, and this ranges from films, politics, everything. And then you become a personality. Okay. So when the personality is reviewing something, then I feel like it becomes dicey because the audience is already polarized on ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही सोचता है, तो ये इसे पसंद क्यों ही आएगी? So that's why I find myself always having this distance from not being too vulnerable publicly, with the fear of them already having कि नहीं वैसे ना अब ना मैं while I'm talking only I internally processed it. People will say whatever they want to say, right? So like, I'll give you one simple example. Both Shubham and I have been extremely vocal about a lot of COVID-related terms, whether it was the Kumbh or people not following, etc., etc. A couple of days before, there was a congregational prayer on the last Friday of Ramadan in Hyderabad, and I posted about it, and people came out to me heavily saying that I am funded by political parties to defame the community, etc., etc. Now, what do I say to that? Like, if you criticize one part of them, the other one will come at you. So it's just going to be वो तो है ही, मतलब उससे आप बच नहीं सकते हो. Shubham, correct me if I'm wrong. मतलब उससे तो नहीं बच सकते ना यार. हाँ, बेस्ट तो यही है. मतलब मैं आज ही कुणाल कामरा का एक देख रहा था, कुछ तो पुराना वीडियो आ गया था मेरे YouTube पे, तो वो और ध्रुव राठी थे. तो उनसे ये पूछा, किसी उनका लाइव सेशन कुछ तो चल रहा था ऑडियंस के साथ, और उनसे किसी ने पूछा कि क्योंकि उनसे ज्यादा तो किसी को हेट मिलती नहीं है, सो टू से इडियट लोगों से, मतलब ठीक है, हमें भी मतलब अगर किसी वजह से समझदार उससे वो मिले क्रिटिसिज्म तो वो फिर भी कंसिडर किया जाए, लेकिन जो आगे सीधा लिख ही रहा है कि कितने पैसे खाए तूने और ये सब किया, तो उसका क्रिटिसिज्म तो कुछ वैल्यू ही नहीं करता ना. तो कामरा ने बहुत सही चीज बोली कि बेस्ट तरीका यही है ऐसे क्रिटिसिज्म को फेस करने का, कि फिर तुम ना तो क्रिटिसिज्म की वैल्यू रखो और ना वैलिडेशन की रखो. अगर मैं इस चक्कर में रहा कि मैं 4 अच्छे कमेंट तो पढ़ लेता हूँ और 4 बुरे वाले नहीं पढ़ता हूँ, तो फिर मैं गलत हूँ. इससे अच्छा तो मेरे कुछ 6-7 लोग हैं लाइफ में जिन्हें मैं मानता हूँ, जैसे वरुण ग्रोवर फॉर एग्जांपल है, जिनसे मैंने कॉमेडी करना सीखा. ऐसे 6-7 लोग और हैं, तो मैं सिर्फ उनको अपना काम दिखाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि हाँ क्या है, तो उनके पॉजिटिव्स भी मैं नोट करता हूँ और उनका क्रिटिसिज्म भी मैं नोट करता हूँ. अब इंटरनेट पे हाँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने लोग हैं, अगर हम सिर्फ अच्छे कमेंट्स पढ़ने लग जाएं और बुरे वाले ना पढ़े तो वो तो फेयर नहीं है. और मोस्टली जैसी हम बातें करते हैं, हम एक स्टैंड लेते हैं कि ये सही है ये गलत है, तो हमें ऐसी पोलराइज्ड हेट तो मिलेगी कि तू बिक गया, ये कर दिया. It is inevitable, yeah. You know, but right now there might also be a situation where things are a bit balanced. I remember when the first wave happened और इतनी toxicity थी social media पे, और जब भी मतलब कि रिव्यूज आ रहे थे, अगर किसी भी nepotistic kid whose some actor's son was coming out with the movies, these guys
the concept of absolutely saying that I will not accept whatever exists and having these sort of like blanket statements of black and white, ye galat hai, ye sahi hai. I think it is something you can't get away from, but it comes with the territory of the work, I guess. Niyati, thank you for your super chat. I love you guys praying for India. Thank you. नियति ने तो किसी फॉरेन करेंसी में डोनेट किया है. I think it's yours. हाँ, यूरो. pound. Yeah, it is pound. East pound. Okay, I also typical NRI. I love you guys praying for India. बाहर से बैठ के praying for India. Very good. That's what they can do. Yeah. क्या करेंगे वो? नहीं, but I wanted to ask you, do you guys follow reviews on YouTube? अरे यार, Shubham, we follow almost. Shubham has something to say. Yeah, I know what he has up his sleeve, so मैं इसीलिए उसका नाम लेता. We follow a lot of people. I mean, whether it is, you or a lot of other people. Some of them just for the cringe value. Some of them for. You follow Jamie for cringe value. Don't we? Not him, but some of us we do value for cringe value, नहीं? मेरे भी बहुत सारे हैं वो cringe value. हाँ, बहुत thumbnail वाला cringe तो है ही यार हमारा. Oh, but that thumbnail वाला, I have to Wali. to he or she that they have their marketing on point. Point to the point. Yeah, it's insane the regularity and the viral nature of it simply for how she or he sells it. नहीं, she only like. She जो भी I don't know. मतलब हाँ, you know what? It's very simple ना. Like मैं अगर अपने एंड्रॉइड फोन पे कोई भी गेम खेल रहा हूँ, मुझे एक OTT कंटेंट प्लेयर का एड आ जाता है which is very very sexual in nature, and they know that this is what it sells, so it's just that. मतलब वो सेक्स का तमाशा ही चल रहा है, तो चलने दो, क्या दिक्कत है? No, now there are Zen, and sometimes I have fallen privy to doing it where because it sells. It sells. This concept, a lot of the comments I get is, why are you talking about the shitty movie? Why are you not talking about underrated films? Why are you not talking about this? I'll tell you, last week, I reviewed Disciple. It's a Marathi film released on Netflix. It was a contender for the Oscars. Nobody cares about it. It was not even in the top 10 of Netflix India of people watching it. And after 2 days, I watched that LOL, Hase To Pase, Arshad Barsi, Bamane Rani show, and everyone's glued because they want to know how bad it is. So this concept that negativity doesn't sell, I think, is delusional also. नहीं, उल्टा है. Negativity only sells. उल्टा Netflix भी सबसे ज़्यादा प्रमोट कौन से शो को करता है अपने? वो कौन सा था ज़ैन, वो बच्चों वाला, वो जिसमें कॉलेज जाते हैं मोस्टली सेन वाला? मिसमैच. वो मिसमैच को इतना प्रमोट करते हैं. मैं देखता हूँ ये दो इतने अच्छे हैं, डिसाइपल और एक ये माइलस्टोन. इनका कहीं कुछ है ही नहीं. माइलस्टोन के ट्रेलर पे 2.5 लाख व्यूज हैं बस, दैट्स इट. उन्होंने माइलस्टोन के लिए कुछ पोस्ट नहीं डाला, कुछ नहीं किया. और मैं देखता हूँ दिन में 10 पोस्ट डाल देंगे मोस्टली सेन और वो कौन था उस फिल्म में हीरो, वो बंदा कौन है वो, उसका नाम रोहित या रोहन ना? रोहित सराफ. हाँ, रोहित सराफ की aren't they the cutest or the best couple in town. उसके वो दिन में 50 पोस्ट डाल देंगे जो शो रिलीज होके भी चला गया. और अच्छे कंटेंट को वो खुद ही, मतलब उनको भी पता है कि यार इस पे नंबर्स नहीं आने वाले. It is dependent on investment of marketing that the producers have done themselves. So I think they push depending on how much they've got. नहीं, I think यार उनको भी पता है कि मार्केट ज्यादा किस चीज की है, कि डिसाइपल कितने लोग ही देख लेंगे. एक और वो मराठी मूवी थी, वो पहले बहुत लास्ट ईयर थी, नहीं जिसमें वो बंदा जिसने एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया, वो रियल लाइफ एक्टिविस्ट नहीं. अच्छा, एक्टिविस्ट. कोर्ट. वो अभी दैट गाय पास्ड अवे. वो जो थे जो एक्टिविस्ट और वो सब बने थे. पर कोर्ट की कितनी बातें होती हैं, मतलब कोर्ट का कहीं मैंने नहीं देखा नेटफ्लिक्स को प्रमोट करते. But I tell you also, it is the fan base also. You do any Telugu film review, positive or negative, their fan base is insane, dude. अरे उनका तो बहुत जबरदस्त. What your opinion is, but Hindi film industry, which is pan India, वो थोड़े lazy हैं. ये अच्छी पिक्चर है क्या अच्छी. I'll tell you, there's a movie that's come out. It's a beautiful film called Milestone. Which is what Shubham was talking about.
Ivan ki, or nobody wants to, think about it. And so when I package underrated films in a listicle, which is like top fives or, whatever's, it sells better because, अब वो भी है कि, are you a capitalist or are you wanting to spread information about, good films? It's a bit of both. No? You can't, in terms of like having a regular revenue stream, you have to make sure that your videos do well also. Correct. And see, what's the point of making good film if nobody watches it? Yeah. So it's not like marketing is not like, I always credit Rajkumar Hirani for that because वो outright commercial marketable films को भी थोड़ा सा एक level of sensitivity दे देता है. संजू छोड़ के. Of course. Of course. I caught the bait with Sanju. I remember 2018 I saw it. I was like, Ranbir Kapoor such a great actor, yeah. और फिर when you spend 2 months away from it, then you're like, oh, this was his shittiest film. So Correct. तू तो हर हफ्ते लाइव करता है मैडम के साथ, उससे पूछ लिया कर कभी क्या सीन था संजू का, क्यों बनानी पड़ी. Someone's Bantai Records has said, good job, like your work is YouTube available. ये तो इसने इग्नोर ही कर दिया क्या ये वाला क्वेश्चन. Financially, like for reviewers. YouTube is it is not stable, but it is good if you do a minimum amount of views per month and consistently do it. Then only it is viable. If you do it in ebbs and flows and are not consistent with it, then it is one of the most the risk is too much. So if you are averse to risk, I wouldn't recommend it. Guys, I also wanted to ask you, you do a lot of reviews, a lot of analysis videos, you talk a lot about actors. Without naming anyone, have you ever got anyone in your DMs telling you what you said was not cool? Of course we have. I think can you tell me an instance without naming them? Or is that happened recently. It's difficult to tell you without naming it. Oh. Achha, I'll start. So I 2 years ago did a underrated actresses video. Okay, this is the time where Sayani Gupta was just doing her debut, and all of these Vikrant Massey had just done A Death in the Gunj. That was the time. Okay, and I had said these are the people who are going to kill it in the next 4-5 years. And मुझे एक DM आया, एक पॉपुलर टीवी एक्टर है, उनकी गर्लफ्रेंड का, हाँ, जिन्होंने 4-5 पिक्चरें की थी mid 2000s में, ऐसे लग रहा है ये कुमार वरुण का क्विजिंग शो, but they had done that, and she was like, how dare you not talk about my debut? How dare you come up with an entire video and not name me? I have put in these many years, I got this award, which was some local award in some other state. मैंने कहा नहीं मैं कुछ देखूंगा मैम, मैं कुछ इंटीग्रेट करने, उस टाइम तो वैसे ही फट जाती थी, ये मतलब 3 साल की बात है, और वो कहते हाँ हाँ मैम I'll do it, but she was like, please don't repeat these mistakes. No, I think we get good and bad both. Good to a lot of them when you talk about them. A lot of people, in fact, from the A-leagues of Bollywood also will come up and say, yaar, thank you so much for giving us a good review. Some of them would actually, and again, without naming them, some of the A-listers of Bollywood, when we sat down with them, they have said, कि हाँ अच्छा करा उसकी मार ली, उसको ऐसा बोल दिया, because we can't say that, but yeah, you were right about it. So and of course, there's a flip side where people come back to us and say, कि अच्छा, this was not fair, this and that, but it's okay. I mean, I always say that it's whatever we say is in a good spirit. It's in good humor also half the time. So it's not like we hate you, but it's just that some of the work that you've done has been bad, and many of them acknowledge it in the right spirit also, where they say कि हाँ यार वो तो फालतू था. Yes, so there was this film. चलो उसका नाम तो नहीं लेंगे हाँ फिल्म का, but पूरा ऐसे बड़ी हिट और बिल्कुल मतलब एकदम स्टूपिड फिल्म, और
बहुत स्टूपिड फिल्म लेकिन बिग बजट फिल्म और बड़ा हीरो है इसके अंदर और बहुत पैसे कमाए फिल्म में, और हमने तो पेल दिया उसको कि जैसी वो थी। एंड देन फ्रेंड ऑफ माइन ही वाज वर्किंग विद द राइटर्स ऑफ दैट फिल्म, तो उसने बिठा के उनको दिखाया कि ये देखो ये तुम्हारी जो फिल्म आई है इसका रिव्यू किया है मेरे दोस्तों ने। एंड दोनों राइटर हंसे, दिल खोल के पूरे रिव्यू पे हंसे, और उन्होंने फिर बोला कि हाँ भाई मतलब हमको मिलते हैं 80-90 लाख रुपए ये लिखने के तो हम लिख देते हैं, बट हाँ सही है, मतलब ये भी समझदार है कि ये समझ गए कि एक्चुअल में क्या बनाया है हमने। और वो मतलब जो भी थोड़ा ऐसा बंदा होगा ना कि जिसको अच्छा काम भी करना आता है और फिर एक पैसे वाला काम भी करना आता है, तो वो हमेशा ना क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले लेगा कि हाँ यार ये तो मेरा थोड़ा था ही ऐसा स्टूपिड काम। क्रिटिसिज्म भी क्या है, हम तो मोस्टली मजाक ही उड़ा रहे होते हैं कि हाँ ठीक है यार इन्होंने, वही जो हमें जब मिलते हैं तो फिर बोलते भी हैं कि हाँ यार अच्छे से भी सही किया ठीक है। ये वो सारे लोग हैं जिनको मतलब पता है कि उनको अच्छा काम भी करना आता है, दिस वाज नॉट देयर बेस्ट वर्क जिसका मजाक उड़ाए, हम उनके अच्छे काम। How do you guys do the review when they're sitting next to you? तब तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तब थोड़ी नहीं यार, उनसे but बोलते हैं कि we also सर take them in confidence, बता देते हैं कि भाई this is They're there for the jokes, right? हाँ हाँ, उनको वो तो पता होता ही है कि फॉर्मेट क्या होने वाला है वीडियो का। लेकिन हाँ मोस्टली जब प्रॉब्लम्स आती है ना कि कोई ऑफेंड हो गया, जैसे जो तेरे से ऑफेंड हुई या रिसेंटली हमसे भी एक एक्ट्रेस ऑफेंड हुई कि ऐसा कैसे बोल दिया मेरे बारे में और मुझे मैसेज किया सब कुछ किया, तो वो आई थिंक वो वही लोग हैं जिनको लगता है कि ये उनका बेस्ट काम है। जो थोड़ा भी बेटर इंसान होगा ना, हाँ वो जिस जिस एक्ट्रेस को बुरा लगा उसके डायरेक्टर का भी मैसेज आया और उसने like बोला for example we हाँ we we sat down with Saif हाँ and Saif was secure enough to laugh over race, I हाँ, love यस it. I love that guy. right? यस So मतलब somebody like him who's so secure, who knows कि अच्छा maybe race franchises or race 3 may not be the best of the race franchisee, Yeah. and who will acknowledge that yes they have done shitty work in the past. Like I have literally sat down next to Saif and told him you did not deserve a Padma Shri for Tara Rampa. Like that's he's a big shot, he's an A-lister. Yeah, But yeah. we've sat next to him, we've told him that you did not deserve your Padma Shri. And that man gracefully accepts and says, yes, I don't deserve it for that, but yes, I do deserve it for something else. But you know, Which Seth he also is a does. double-edged sword in such a way where he'll promote the movie and while promoting it, diss it also for its Huh. content. I remember when he was promoting Tanaji, he was like, nah, this content's problematic. You're promoting the movie right now. Ajay Devgan apparently got damn pissed off with it. Anyway, so वही I think once you're secure, once like Shubham said कि you know कि आपने इससे बेहतर भी काम करा हुआ है, और आप कर भी लोगे इन फ्यूचर, हाँ तो इनसिक्योर पीपल ओनली विल आई थिंक डीएम अस, थ्रेटन अस कि कैसे बोल दिया क्या कर दिया। जिनको पता है कि वो इससे बेटर, जो मैं बोल रहा था कि वो सेम एक्ट्रेस ने तो बोला कि कैसे बोल दिया ऐसा ऐसा, और उसी का जो डायरेक्टर था उसने बोला कि हाँ आई नो दिस इज नॉट माय बेस्ट वर्क सो आई एंजॉयड ऑल योर जोक्स, जब मेरा बेस्ट काम आएगा तो आई एम श्योर कि तू ही तारीफ भी करेगा। correct, and we did also, and we eventually did also. हाँ, which we eventually did also. तो I think वो सारा सिक्योर, कितने आप सिक्योर हो और कितने इनसिक्योर हो उसी पे डिपेंड करता है। No, it is dicey that way. You know, I find acting in itself is such a job where you get external validation only when you spend 6 months in a project and then it comes out. So for 6 months to come out and for everyone to just shit on it, they're like, you know, hold it in such a precious manner. They're like, oh my god, I spent 6 months doing this. How can you shit on it? But you know, But that's with the your nature of craft to take हाँ, it. बट आई थिंक अब पब्लिक डोमेन में कुछ भी काम करोगे तो हाँ. वो तो होगा ही ना। अभी True. लाइक मोदी ये एक्सक्यूज नहीं बना सकता ना कि मैं 18 घंटे दे रहा हूँ, अबे दे के कर क्या रहा है वो पे तो उस पे तो हम सवाल उठाएंगे ही ना। जस्ट बिकॉज यू हैव गिवन 6 मंथ्स ऐसा नहीं हो सकता। और एक जो तूने मुंबई जाने वाली चीज का डिस्कस किया था ना, वहां में बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला हु आर जस्ट एक्टर्स, Yeah. है ना, और थोड़े ऐसे थे कि जो एक्टिंग के साथ दे नो समथिंग एल्स टू डू। कोई डांसर होगा, कोई सिंगर होगा, कोई म्यूजिक बना लेता होगा, कुछ तो कोई कर लेता होगा। दे आर मच मोर सिक्योर्ड। एक्टिंग में इतना कंपटीशन है, तो उनकी भी गलती नहीं है एंटायरली कि वो इनसिक्योर हो गए। उनको भी पता है कि, और मतलब स्पेशली लड़कियों को तो जैसे कास्ट किया जाता है अभी भी कि शायद थोड़ी सी सुंदर हो गई तो उसको रोल मिलेगा। देर मतलब प्रॉपर ऐसे लोग हैं जिनको कि इसलिए सिर्फ रोल नहीं मिला कि वो अच्छे एक्टर होंगे बट सुंदर नहीं है,
या लड़कों में भी होगा कि बिल्ड अच्छा नहीं है, तो फिर उनका इनसिक्योर होना बनता भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार यही हमारा एक चांस था और इस पे किसी ने खराब रिव्यू दे दिया या किसी ने ऐसा बोल दिया तो उनकी वो बैड पीआर होगी, तो उनका भी there is a channel. He posts, I think 7 to 8 videos a day. Okay. And that ranges from movies to announcements to poster to IPL to updates of IPL, and all are just the मतलब जो भी है समझ जाओ. So the point is that you look at their demographic also, what sells, and there is a dramatic thumbnail, it sells. बाकी सब nobody is watching other videos of being क्या fantastic film, no one's watching that. No one's gonna watch that. Yes. You have to package it in a way. It is a that way, I guess. Also, guys, I wanted to lastly talk to you about Radhe. So it's the next release, and I'm sure your video is going to be an entertaining one. So, what is your opinion of the film? What are your expectations? And बताओ. मेरे को तो बड़ा दुख है कि घर से देखनी पड़ेगी. मुझे तो मजा आता है सलमान खान की फिल्म जाके. मुझे तो तभी मजा आता है कि सलमान खान की फिल्म जाके देखो पुरानी दिल्ली में, और वो सिंगल स्क्रीन वाले पे, वहाँ मजा आता है असली देखने का उस फिल्म को. इधर से लोग जितना ही मतलब बजरंगी भाईजान में जब भाई पिट रहे थे भाई, लोग रो रहे थे दोनों साइड में. वो असली मेला लगता है ना, मेला लगता है वो मेला है. हाँ एग्जैक्टली, वो सेलिब्रेशन है. तब लगता है कि हाँ ईद हो रही है. अभी घर में बैठे बैठे तो चलो देख लेंगे. हाँ तब वो यार लोग रोते हैं और वो सब, वो एक प्रॉपर वो जो है मेला ही है उसके लिए. हाँ करेक्ट वर्ड. तो उसको तो ऑफ कोर्स हम मिस करेंगे. बाकी घर से देखते हैं कैसे देख पाएंगे, क्या कर पाएंगे. बट मतलब हाँ. Have you seen the original one? No, even I haven't. हाँ अभी YouTube पे free available है. हाँ नहीं, but अब मैं राधे के बाद ही देखूंगा. But you watch the South Korean film and you realize there is no way that amount of effort, that amount of technical detail is going to be in this film. अरे यार उन्होंने मुंबई में उसको, कौन है विलेन, रणदीप हुड्डा, ओवरकोट पहन के चल रहा है वो मुंबई में. अरे because he mimics what the wardrobe of the original guy is. यार थोड़ा तो लॉजिक तो तुम लगा लिया करो ना कि ओवरकोट इस पे ओवरकोट. मुंबई में शर्ट नहीं पहनी जाती है, मन करता है कि बनियान में बाहर निकलो, इतनी गर्मी है. वो ओवरकोट पहन के निकल रहा है. बॉलीवुड का पुराना लॉजिक है ना. रेस पे नहीं याद है वो फर के कोट पहन के घूम रहा था रेगिस्तान में. हाँ नहीं यार, बट 2009 में फ्लैनल शर्ट पहनी है तो 2021 में क्यों नहीं पहनी? It's an extension of Wanted now. Sahil, thank you for your super chat, and Sunny, thank you for your super chat. Lastly, I guys wanted to say that first of all, thank you for joining me here. I'm truly grateful, and hopefully, eventually, somehow we can do a collab on a particular piece as well, and it'll work out well. Hopefully, when there's some form of normalcy also. Correct. हाँ physically करेंगे अब तो साथ में. ये तो Zoom में ज़्यादा मजा नहीं आता. हाँ ऑनलाइन तो इतना ही हो पाता है. I was talking to Akash Banerjee, वो जो देशभक्त चैनल, उनको मतलब कि 21 दिन से he had like COVID, and then for him to then take a step back from the YouTube, and for people then to right now companies functioning, it's a terrible situation, but I guess everyone's trying to improvise in their own way. You guys as a company, you guys have found some kind of rhythm, right, to function in this way? Yeah, we last lockdown also we figured out a method of shooting from home, etc., etc. Shubham was locked up in a different city, I was in a different city, so we have our own sort of a how do I put it, an improvised studio setup at our homes. So हम उससे कर लेते हैं. हम अभी भी घर से ही काम कर रहे हैं, घर से अभी भी एक साथ ही रिव्यूज बना रहे हैं, लाइव्स कर रहे हैं. So that's the good part about technology, I think. But the camaraderie, the energy and the emotion that at least the two of us and Rajesh included, three of us, we get on while being on that set is something else. And वो I think शुभम का एक running joke भी कि वो हमारा टैलेंट है, उस कुर्सी का टैलेंट है. तो हम भी थोड़ा इंडियन बैट्समैन की तरह हैं, अपनी पिच चाहिए हमें वाली परफॉर्म करने के लिए. Yeah, you make do with what you have right now, I guess. बढ़िया, अब ठीक है.
stay safe, guys. Mask up, and thank you so This was much. a lot of fun. Thank you, Anmol, Yes, for having thank me. you, Jami. Yes. And thank you so much. And hopefully for a better future as well. Let's keep on working. Yes, towards whatever. definitely. And again, thank you to everybody who has been donating over here. Yes. Whatever, I mean, don't go by the amount that you guys have been able to do it, but every contribution is significant enough. And of course, trust you to put it in the right hands. Also, And, Zain, again, I just wanted to interject and say, you know, you're damned if you do and you're damned if you don't. So I found myself getting a lot of recommendations. Yahan karo, yahan nahi karo, ye galat hai, wo galat hai. So I am right now in a situation where I've done my research and made sure that whatever contributions you guys are giving, that it goes into safe hands and to people for help. So, you know, this is not a racket in any way. So I just wanted to guarantee you guys that. And I'm grateful for every small contribution that you guys have given. And thank you again, Zain and Shubham. And stay safe. Yeah. same Yes, here. thank you everyone. So और much. This was all ours. कुछ लोगों का वो भी आ रहा था कि मैं स्टूडेंट हूँ इतना ही दे पाया, तो अगर ऐसा भी है कि आप ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हो कुछ नहीं, वो मतलब ये तो ठीक है यहाँ ऑर्गेनाइज कर लिया, यहाँ दे दिया, अदरवाइज अपने आसपास तो दे ही सकते हो। तो आसपास वाले लोगों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बस। थैंक यू। Okay guys, see you. और बहुत मजा आया, फिर से वापस से